Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic, that is Economic Survey 2024-2025. Now, what is Economic Survey? So basically, we have done budget, which is actually the government's promise for the upcoming fiscal year. So what are the expenditures and the receipts the government will be doing? The Economic Survey tells us about the existing or the fiscal year in which we are actually, which is actually going to end on 31st March. So it tells us about whatever is currently happening in the Indian economy and actually the world economy. Okay. So that is why it is important. Now you'll be thinking, sir, is it important for law entrance exam? Yes. And I'll give you the reason. For example, in CLAT 2020, they had asked about foreign exchange reserve. In fact, this was asked later on in ALET exam in 2021. What is the foreign exchange reserve of India? What are long-term repo operations? So they're asking questions, basic economics questions are also being asked. Like in ALET exam, one question was asked, a definition of GDP, gross domestic product, what is that? So in today's class, I will not be going very much in detail, but I will discuss the basic broad idea about how the economy is working. So what are the sectors of the economy, how they are performing, what is exports, and how the world economy is performing, etc. So the basic rough idea I will give you so that it would be easy for you to understand how the economy is working in India and the world level and the questions associated with that. Okay, is it clear? Am I audible, visible? If everything is right, fine, please write yes in the comments. So yesterday I did a session. आप जाना live वाले section में. I did a session important economic terms and keywords. Please go and watch it because this video will help you understand our budget class. Okay. So we have already taken budget class. One is in English and another is in English. English means Hindi plus English. So whichever video you can watch according to that. But this video also you should watch because this will be helpful in today's class and the budget class as well. Okay, so let us begin with economic survey. So basically, economic survey is published by whom? Again, the same department, same ministry as the budget. Okay, so Department of Economic Affairs, Economic Division, Finance Ministry. Okay, so this is actually the same department which comes up with the same like budget and all. Okay. Now, so there's a person, a very famous person, a very important person who is responsible or instrumental in publishing economic survey. And please tell me what is the right answer to this question. Chief Economic Advisor, Chairman, Prime Minister Economic Advisory Council, Finance Secretary, RBI Governor. What is the right answer? So economic survey जो publish होता है उसमें सबसे अहम role किसका होता है? Like there are many officers who are working, but one person is very important in that. And the answer to this question is, so option A, Chief Economic Advisor of India. And who is the Chief Economic Advisor? What is the name of the person? Yes, Ashnoor Kaur, you're right. A is the right answer. And who is the person? Who is the Chief Economic Advisor of India? So the right answer is Mr. V. Anant Nageshwaran. He is the Chief Economic Advisor of India. Okay. And he is actually instrumental in publishing economic survey. Okay, so A is the right answer. So now let us begin with the chapters. Yes, Ashnoor Kaur, you're right. V. Anant Nageshwaran is the right answer. So the first chapter is talking about the state of economy getting back into the fast lane. So basically, the first is talking about how the economy, the world economy is performing. So the first thing is, I hope you are aware, there are three sectors. Or primary sector, primary, secondary, and tertiary. Yes, I hope it's clear. Primary means agriculture and allied activities. Agriculture and allied activities. Allied activities means like animal husbandry, dairy farming, etc. Secondary means manufacturing. And tertiary means services. And that is how the three sectors are. Now, so you have to understand one thing, that it is saying that we have seen decline in slowdown in global manufacturing trends, even in parts of Europe and Asia. However, in contrast, the service sector performed better, supporting growth and all. Okay, and that is what they're saying. Basically, इस तीनों sector में इसका performance, the second one का performance उतना अच्छा नहीं रहा. So the second one, that is the manufacturing sector, this performance was, we have seen slowdown. Whereas in agriculture, we can say specifically services, there was actually, we have seen actually better performance. That is what this is basically talking about. Okay, so the economic survey begins with that. Then it talks about India's real GDP growth is estimated to be around 6.4% in the fiscal year FY25. Now, what is the meaning of FY25?
So when I'm writing FY25, I mean fiscal year 2024-2025, and it means which is actually from 1st April 2024 to 31st March 2025. Okay, so this is FY 2025. So they are saying it that real GDP. Now, what is real GDP and what is nominal GDP? So real GDP means GDP inflation adjusted GDP, जिसको कहेंगे inflation adjusted. So we have taken into account the impact of inflation. So we have excluded the impact of inflation. So inflation adjusted GDP it is called. That's called as real GDP. And this GDP is actually calculated at constant price. GDP at constant price we कहते हैं. Okay, so that is actually the growth would be 6.4%. This is actually the projected growth according to the economic survey. देखो मैंने कई बार देखा है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा इस बार है ना. सो दैट इज व्हाट द की आइडिया इज. ओके, नाउ अगर आप देख सकते हो सो इट वुड बी है ना जो ये ग्रीन वाला है FY25 के लिए. सो 6 पॉइंट ये है ना 6.4 ये जीडीपी है. सो देखो 6 से थोड़ा सा ऊपर. सो 6.4% वुड बी द ग्रोथ दिस फिस्कल ईयर. ठीक है. Now the next is now this is also talking about Russia-Ukraine conflict and Israel-Hamas conflict. Because this also impacts global growth है ना. steady global growth यानी बहुत तेजी से नहीं हुआ है, ठीक ठाक हुआ, but and varied regional dynamics means actually the growth is not that up to the mark. उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाया वर्ल्ड लेवल पर because the reason is Russia Ukraine war and Israel Hamas conflict and because of which we have seen supply chain disruption. इस वर्ड लिखते हैं. मतलब ये है कि the trades have reduced and all, there were a lot of issues. Another important thing, GVA is gross value added. ये पूछ रहे हो देखो इतना डिटेल नहीं जाना है इसलिए कि इसमें बहुत सारे मैप्स आएंगे जो कि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दोस थिंग्स. ओके, सो जो देखो मैं जो कीवर्ड्स है वो मैं बताता हूं. जैसे जीडीपी पूछा हुआ एग्जाम में. सो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी है ना. दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम और ये मैंने इकोनॉमिक टर्म्स वाले क्लास में कल कराया भी था एंड डिस्कस इट. ठीक है. सो पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका मनी वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू, सबको जोड़ दोगे तो जीडीपी हो जाता है. ठीक है. और जीडीपी में अगर जब मैंने आई सिंग रियल जीडीपी यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बोल रहे हैं एंड दिस जीडीपी विल बी ऑन कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. और नॉमिनल जीडीपी मतलब आई हैव नॉट एडजस्टेड जीडीपी इन्फ्लेशन, तो ये करंट प्राइस पर होता है. बस इतना पता होना चाहिए. अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूं कि व्हाट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, बट जस्ट हैव एन आइडिया. रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. वी हैव टेकन इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन एंड एक्सक्लूडेड द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. व्हेयरएज नॉमिनल जीडीपी में जैसे करंट प्राइस पे चल रहा है उसी को ले लेते हैं. ठीक है. सो रियल जीडीपी विल टेल यू द रियलिटी. असल सच्चाई जीडीपी का रियल जीडीपी बताता है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा होता है ना कि 6.4% ग्रोथ एंड ऑल. ओके, यस. तो देखो दो तीन चीजें बात की जा रही है कि इन द वर्ल्ड लेवल पर वी हैव सीन सप्लाई चेन डिसरप्शन, नॉट एट दैट मच ग्रोथ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड अनदर इज साइबर अटैक. Even in India we have seen a lot of cyber attacks and a lot of digital arrest, fraud calls and all, and that is also a very worrying trend and all in digitization and all. अब देखो वर्ल्ड ग्रोथ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से समवेयर अराउंड 3.2% 2024 में, 3.3% 2025 में. देख रहे हो 3.2% के आसपास. तो अगर वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ पूछा जाए, यस वी हैव डिस्कस्ड. ओके अशनूर, हाँ आपने देखा था रियल नॉमिनल जीडीपी मैंने बताया था. ग्रेट. हाँ, सो वर्ल्ड जीडीपी का जो ग्रोथ है वो समवेयर अराउंड 3.2 3.3% है. ठीक है. दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग है ना. देखो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं ये रफली अराउंड 3.2 3.3% है. ये दोनों जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज है. एई मतलब ईएमडी मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज. एडवांस इकोनॉमी का मतलब होता है जैसे यूएस, कनाडा, चाइना, कनाडा, ये सब. ईएमडी में जैसे इंडिया आ गया, इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं. तो इतना नहीं जानना बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. दैट इज हाउ द थिंग इज. Now when I'm asking about inflation, please tell me, I'm asking some few questions related with inflation. पहले ये बताना कि आरबीआई का टारगेट क्या है. What is RBI's target of inflation? मतलब कितना से कितना परसेंट होना चाहिए. Can anyone tell me? What is the target of RBI? It's a recommendation of Urjit Patel committee.
कैन यू टेल मी? इन्फ्लेशन टारगेट जो आरबीआई का है वो है 4 ± 2%, विच मीन्स 2% to 6%, यानी 2 से 6% के बीच अगर इन्फ्लेशन है इंडिया में. यस अर्शनूर कौर, वेरी गुड. हाँ ग्रेट. हाँ सो इट इज फाइन, ओके इट्स हेल्दी. तो हम लोग चलते हैं. अगर आप वर्ल्ड का देखोगे इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज, एडवांस मतलब वही रिच कंट्रीज, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो सितंबर 2022 दिसंबर में हाई पर था, फिर नीचे गिरते गया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ठीक है 2-4% के आसपास. सिमिलरली इंडिया का ग्रीन वाला इंडिया का है, अब देखो मार्च 2022 में यहाँ पर था 8 के आसपास था, फिर यहाँ पर भी 6 आया, अब देखो करंटली क्या है दिसंबर 2024 में कहाँ पे, यहाँ पर है. इज इट बिटवीन 2 to 6%? 2 to 6% यहाँ पर आता है. यस यही ना 2 to 6%. सो देखो अभी अब आ गया है जो ग्रीन वाला को ध्यान देना. चेक द ग्रीन वन बिकॉज दैट इज इंडिया. तो इट इज एक्चुअली इन्फ्लेशन इन इमर्जिंग मार्केट, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है यस इट इज नाउ विद इन दैट बैंड ऑफ 2 to 6%. ठीक है. अच्छा ये मैंने क्लास लिया था, प्लीज गो एंड वॉच इट, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट उर्जित पटेल कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी. इसको सर्च करना YouTube पे, यू विल गेट दिस वीडियो. ठीक है. नाउ पॉलिसी रेट्स, मैंने कल क्लास लिया था, yesterday I took a class where I have told you about repo rate, उसी को पॉलिसी रेट कहते हैं. ठीक है. एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट बिकॉज पॉलिसी रेट से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंपैक्ट करता है. ठीक है. सो इफ देयर इज मोर रेपो रेट, the commercial bank will have less money because the commercial bank will have to pay more interest to the RBI. And when the commercial bank will have less money, so the people will have less money because they will extend less loan to the people. And people's money in hand would be lesser. उससे क्या होगा कि there will be less demand and less demand pull inflation. मतलब ये होता है कि अगर आप रेपो रेट इंक्रीज करोगे तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड. ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो अगर आप देखोगे तो इंडिया का देखते हैं ब्लू, ये वाला है ना. तो यहाँ से मार्च 2022 में 4 के आसपास था, बढ़ते बढ़ते आए और एकदम फ्लैटन हो गया 6 पॉइंट समथिंग है ना. अगर देखो कितना 6.5 के आसपास है ना. तो ये दिखा रहे हैं कि 6.5 है ये वाला, और काफी दिनों से 6.5 है, सिंस मार्च 2023 वी आर सीइंग दिस. सो ये जो लाइट ब्लू वाला ये इंडिया का है पॉलिसी रेपो रेट. ठीक है. तो 6 के आसपास. इन लोग अभी देखोगे जो ये यूएस का यहाँ पर ये भी 5-5.5 के आसपास है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है. So this you have to understand now. Then a strong focus on capex. ये भी मैंने बताया था कि there are 2 types of account in last class, revenue account and capital account. A revenue capital account में अगर expenditure हो रहा है capex, this is important because this helps creates job. New assets are created. New asset creation इसी से होता है, buildings, bridges, है ना. So अगर ये देखो आप देखो लिख रहा है कि unions capital expenditure as a percentage of total expenditure, तो ये बढ़ रहा है. So if we are spending more on capital expenditure as a percentage of total expenditure, it means yes, we are investing in creation of new assets. So when there is creation of new assets, there is a scope of job creation. ठीक है, ऐसे समझना है. और एक रफ आइडिया लेना है. रुपी कहाँ से आता है? So 22% government is getting from income tax, 24% from loans, borrowings and liabilities में तो क्या था, कर्जा वगैरह लेके ना. Then we have union excise duty, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस लगता है उसको एक्साइज टैक्स कहते हैं. GST and others. कॉर्पोरेशन टैक्स है ना 17%. कस्टम्स जो इंपोर्ट टैक्सेस लगता है, हाँ इंपोर्ट से सामान मंगवाओगे तो है ना. नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट्स, ये सब स्मॉल अमाउंट है. देन रुपी गोज सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? सो शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन स्टेट को जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स इट टू द स्टेट्स. देन दिस इज फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर, दिस इज आल्सो एक्चुअली गिवन टू द स्टेट्स. ठीक है, एक तरह से. फिर इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो ओल्ड लोन लिया हुआ है, पुराना कर्ज, सो व्हाटएवर द ओल्ड लोन्स वी हैव टेकन वी आर पेइंग इट बैक. 16% इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, उसमें जाता है. देन सब्सिडीज में 6%, डिफेंस में 8% है ना. डिफेंस बजट 8% इंडिया का. पेंशन में द रिटायर्ड पीपल्स सैलरी एंड ऑल है ना. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, अदर एक्सपेंडिचर 8%. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ इन्फ्लेशन जो होता है, now you have to understand inflation is generally calculated on CPI, consumer price index, and wholesale price index. होलसेल मतलब और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज द डिफरेंस? ये रिटेल मार्केट में होता है और ये होलसेल मार्केट में होता है. ठीक है. सो दैट द इन्फ्लेशन होलसेल मार्केट इज कैलकुलेटेड थ्रू WPI, अदरवाइज इट इज कैलकुलेटेड थ्रू CPI. अब देखो CPI इन्फ्लेशन जो ब्लू वाला है, इफ यू सी इट केयरफुली, ये यहाँ पे 2 to 6% के रेंज में, देखो ये 2 है और 2 to 6% के रेंज में. हाँ, so you can see yes, it is somewhere around 2 to 6% range. But the red wala CFPI, if you see it carefully, this one,
दिस इज फूड इन्फ्लेशन, स्पेसिफिकली ये सेपरेट करके उन्होंने कैलकुलेट किया, CFPI है ना, कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन इज एक्चुअली हैज क्रॉस्ड 8-10%, तो 2 से 6% के रेंज में नहीं है, देख रहे हो, इट इज एक्चुअली आउटसाइड। तो मैं बताता हूँ कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन वो होता है, दीस आर आस्क्ड इन एग्जाम कई बार, तो जो टोटल इन्फ्लेशन है जिसको होलसेल, जिसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी टोटल जो हेडलाइन CPI, हेडलाइन WPI माइनस फूड एंड फ्यूल, बिकॉज फूड एंड फ्यूल को बहुत वॉलेटाइल माना जाता है, तो उसको अगर हटा के कैलकुलेट किया जाए, फिर रिमूव देम, देन कोर इन्फ्लेशन आता है। कोर इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक चल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो इससे है, ये फूड इन्फ्लेशन इज एक्चुअली वेरी हाई, दे हैव क्रॉस्ड दिस 2 to 6% लिमिट, एंड 2 to 6% ये वाला हुआ है ना, देखो रेड वाला कहां पे, फूड इन्फ्लेशन। तो एक जस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाता हूं, आप देखोगे फूड इन्फ्लेशन, वेजिटेबल्स की प्राइसेस देखो, ये FY24 ये वाला देखो, है ना, आर यू एबल टू सी, 15-16% से ज्यादा। सो एक जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए, रटना नहीं है, बट हैव एन आइडिया दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एंड ऑल। तो वन रीजन इज जो फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फूड प्राइमरीली, ठीक है। फिर FDI की हम बात करते हैं, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ FDI। मान लीजिए अमेरिका से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए US की कोई कंपनी है एंड इट इज कमिंग इन इंडिया एंड डूइंग कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनी, दैट्स कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस साल क्या देखा गया, वी हैव सीन डिक्लाइन इन दैट। देखो आपने देखा ना, ये सब न्यूज आ रही थी, नेट FDI ड्यूरिंग दिस टाइम फेल, तो नेट FDI इनफ्लो डिक्लाइंड ओवर दिस पीरियड। अगर आप गौर से देखना, नेट FDI इनफ्लोज RHS वाले, यानी ये $15 बिलियन के आसपास, 16-17 बिलियन डॉलर, तो यहां पर था ये FY21 में, और ये देखो गिरते ही चला गया। दिस इज नेट FDI फ्लो इनफ्लो। तो जब बाहर से नेट FDI आ रहा था वो घटने लगा। व्हाई? Because FDI generally is considered as very good, that if foreign investing is happening, then transfer of technology will happen, it will create more jobs, and it gives a signal that Indian economy is good. But now the FDI is declining. उसका reason जो बताया गया है, the rise in repatriation through secondary sales is because it points to investors' confidence in profitable exits for direct investors. ठीक है, अब देखो कोई बंदा FDI इन्वेस्ट कर रहा है, मान लिया किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख तो कम है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल बिकॉज़ कंपनीज डू इन्वेस्ट, या थोड़ा बड़ा नंबर बताते हैं। सो देयर इज अ कंपनी व्हिच इन्वेस्टेड 100 करोड़ इन इंडिया and it has got the profit। FDI whosoever is investing, he or she is expecting a better return। कोई कहीं काहे क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी कंट्री में, ताकि उसको ज्यादा फायदा हो, उससे 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 110 करोड़ मिले। तो अगर मान लीजिए इसके वर्थ जो 120 करोड़ हो गया, now he is exiting, he is taking that money back because he believe that this is the best time, हमको काफी फायदा हो गया, and this is the profitable exit, and that is why I am taking the money out। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे सेज, दैट पीपल बिलीव कि अच्छा अभी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज अच्छा खासा हमको फायदा हो गया, नाउ आई शुड टेक द मनी बैक, दैट इज द आइडिया। सो दिस इज द रीजन व्हाई FDIs आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन द क्लैट एग्जाम, कि व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, है ना, दिस वाज आस्क्ड इन क्लैट 2020 एंड ALET 2021। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पूछ दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का भी कितना है, सो 634.6। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, सो दे आर राइटिंग दैट लास्ट टाइम वी हैव 616.7 बिलियन डॉलर एट द एंड ऑफ जनवरी लास्ट ईयर, फिर ये बढ़ के सितंबर में 700 क्रॉस कर गया था, यू कैन सी, बट नाउ अगेन इट हैज मॉडरेटेड, मतलब थोड़ा सा कम हो गया, इट इज अगेन रिड्यूस्ड टू 634.6 बिलियन डॉलर इन जनवरी दिस ईयर। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे इंक्रीज करा था, सितंबर में इंक्रीज हुआ, तो थोड़ा सा ऐसे आ गया, है ना, दिस इज सितंबर एंड दिस इज जनवरी दिस ईयर 2025, दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, है ना, तो सितंबर में राइज हुआ था, 700 क्रॉस कर गया, 700 बिलियन डॉलर क्रॉस, और ये दिसंबर, ये जनवरी में 634.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, सो मे बी आप कोई एग्जाम में बैठने जाओगे तो ना 600 US बिलियन डॉलर है, तो समवेयर है 634 US बिलियन डॉलर, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। So if you are going to attempt any exam, you should have a basic idea। अब देखो इसमें ना इसके कंपोनेंट्स रहते हैं, FCA, गोल्ड, RTP, SDR। ये क्या होता है? FCA मतलब फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांसफरशिप पोजीशन, ये दोनों IMF का होता है, मतलब करेंसी नहीं होता, बट इसका IMF से लेना देना, इट हैज सम रिलेशन विद IMF। ठीक है, एंड दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री। देन गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी एसेट में क्या होता है, डॉलर,
यूरो, पाउंड, ठीक है, एंड येन, युआन, ये सब होता है। तो मोस्टली जो होता है ना, तो अगर आप देखोगे तो मेन जो हिस्सा होता है एफसीए ही होता है। तो इतना बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट है। थोड़ा सा गोल्ड है, देन दिस इज गोल्ड, एंड फिर रेस्ट में आरटीपी, एसडीआर, थोड़ा सा इसको मिला के कहते हैं। So mostly 70-80% of the total foreign exchange reserve is FCA, foreign currency asset, which means dollar, pound, euro, etc. उसमें भी ज्यादातर डॉलर होता है, because most of the international transactions happen in dollar. ये जरूरी क्यों है? Why we should have a good forex reserve? Why? It is helpful in imports. यही प्रॉब्लम हुआ था श्रीलंका में. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट लेट मी गिव यू एन आइडिया बिकॉज यू शुड नो. फॉर एग्जांपल, अगर हमको इंडिया, मान लीजिए इंडिया शुड बाय समथिंग, हमको कुछ खरीदना है कहीं से. इफ आई वांट टू बाय एन ऑयल फ्रॉम सऊदी अरब, सो आई हैव टू पे इन डॉलर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन. तो मेरे पास डॉलर रहेगा तब तो, सो दैट इज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो मेरे पास डॉलर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जो फॉरेन करेंसी एसेट है, ये वाला हिस्सा, इसमें डॉलर है, सो दैट इज व्हाट आई विल बी पेइंग. अब मेरे पास डॉलर नहीं रहेगा तो हम इंपोर्ट कहां से करेंगे? सो फॉरेक्स रिजर्व इज हेल्पफुल इन इंपोर्टिंग थिंग्स. जैसे श्रीलंका में 2 years back what happened was कि forex reserve was very low, near to zero आ गया था. So now it cannot import anything, and when it cannot import anything, this is called as balance of payment crisis. Okay, and this balance of payment crisis happened even in India in 1991. I hope you are aware, 1990 के आसपास. And when balance of payment crisis happens, which organization helps? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है? प्लीज राइट इन द कमेंट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. ठीक है, so ये सब पता होना चाहिए, है ना. फिर आप देख रहे हो मॉडरेशन बताओ तो थोड़ा कम होना, रिड्यूस होना स्लाइटली इन ग्रोथ ऑफ बैंक क्रेडिट. तो बैंक जो लोन एक्सटेंड कर रही है टू डिफरेंट सेक्टर, इट हैज स्लाइटली डिक्रीज. अगर आप देखोगे सब हल्का हल्का नीचे की तरफ जा रहा है ना. क्रेडिट टू एमएसएमई, है ना, ये वाला पर्पल वाला है, एमएसएमई को लोन देना, पर्सनल लोन पर्सनल लोग के लिए, सर्विसेज के लिए लोन देना, नॉन फूड क्रेडिट, क्रेडिट टू इंडस्ट्री. तो ये बस एक रफ आइडिया होना चाहिए. So which gives, किसी ने बताया नहीं, balance of payment crisis happens, International Monetary Fund helps. We'll be having a session day after tomorrow, Thursday को, Bretton Woods conference, where I'll discuss about IMF. ठीक है, so class देखिएगा. I hope you will enjoy that. अब देखो क्या बता रहे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट आल्सो डिक्रीज. अब ये सब पता होना चाहिए. नो, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, व्हाट इज दिस, यू शुड बी नोइंग. ठीक है, तो क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? तो जीपीए 5% से रिड्यूस हो गया, 2.6% हो गया. What is non-performing asset? Yeah, bad loans. Anyone? Non-performing asset और bad loan, ये क्या होता है? मैं बताता हूँ, because these remain in the news. जब आप editorial पढ़ोगे, when you read any editorial, The Hindu, Indian Express, Times of India, I'm sure you must have seen these terms: non-performing asset, bad loans, etc. And people have problem understanding, and that is why I'm telling you here. Non-performing asset ऐसे समझ लो. For example, आप this is X. Yes, Ashnoor Kaur, very good, great. हाँ, मान लीजिए एक्स बंदा है, इसने बैंक से लोन लिया 100 रुपये. I'm just giving example, 100 rupees. And the agreement is कि by 31st December I will pay the money back. ठीक है, along with the interest. But what happened was the 31st December the deadline crossed, plus 90 days crossed, and this person has not given the loan, not returned back the loan or not returned the interest money. दोनों में से कोई नहीं दिया, या कोई एक नहीं दिया. So that is called as non-performing asset या bad loan. ये डिफॉल्टेड लोन, कर्जा वापस नहीं किया गया है और 90 दिन की पीरियड गुजर गया है, ना कर्जा दिया गया ना सूद वापस किया गया. दिस इज कंसिडर्ड एज बैड फॉर बैंक्स. क्यों? अगर मान लीजिए बैंक कैसे काम करता है, लोग जमा करते हैं मनी एंड बैंक एक्सटेंड लोन्स. इफ द बैंक इज नॉट एबल टू गेट बैक दैट लोन, then it will not extend further, and maybe if things become worse the bank can collapse. अगर सारे लोग एक्सटेंड किया, कोई वापस नहीं कर रहे, तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा ना. So that is what you should be knowing. This is called as gross non-performing asset, and yes, it has declined. तो अगर आप देखोगे तो 2.6 बहुत अच्छा. This is a positive news. The second thing is capital to risk weighted asset ratio for scheduled commercial bank is 16%. ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं. इस तरह समझ लो कि द हायर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज, द स्ट्रॉन्गर द बैंक इज, है ना. बैंक्स कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट. तो जितना कम डिनोमिनेटर होगा और जितना ऊपर नॉमिनेटर रहेगा उतना अच्छा होता है. सो द हायर द सीएआर इज द बेटर इट इज. तो बेसल नॉर्म्स होता है. बेसल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड. तो बेसल नॉर्म्स इज बेसिकली अबाउट साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस.
कि कितना अच्छा बैंक वर्क करता है। बेसल नॉर्म्स कहते हैं कि 8% या 10% के आसपास होना चाहिए। आरबीआई सेज कि सीएआर शुड बी 9%, ठीक है, फॉर कमर्शियल बैंक्स है ना, और पब्लिक सेक्टर ने गवर्नमेंट बैंक्स के लिए 12% होना चाहिए। बट यस, वी आर हैविंग वेरी गुड 16.7% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो दिस इज आल्सो अ गुड थिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखोगे, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड में देख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.2%, ये वाला जो हिस्सा है ना, और ये अगर ब्लैक से देखोगे तो डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे सेज, ओके। Now the next one, periodic labor force survey का data है, this is released by labor ministry, so that is what you should be knowing about. Then monetary and financial sector development, let us see here. अब देखो ये तो हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी डन, yes. Now we'll be talking about this financial inclusion, ये सब टर्म पता होना चाहिए, and we have seen the increase from 53.9% to 64.2. Now what is this financial inclusion, कोई बता सकता है? And there's a scheme of government of India for that. फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, एंड प्लीज टेल मी द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड विद दिस। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस इंक्लूडिंग दोस पीपल who are not a part of banking net into the banking system. Now what is the meaning of it? Simple language है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला उसको बैंक अकाउंट खुलवा देगा. So the one who is not having a bank account or is not dealing with the banks as far as his savings and loans are concerned, he or she is supposed to have a bank account. Why? Bank account से पहला फायदा ये होता है कि जो बंदा है, मान लीजिए उसका कुछ सेविंग्स है, मान लीजिए वाई कोई आदमी है, so he will save that money in the bank. Second, अगर उसको लोन लेना होगा, so he can take it from the bank which is comparatively lesser interest. Interest rate कम होता है ना as compared to if a person goes and take loan from money lender, local money lender in village. Because money lender बहुत ज्यादा टैक्स इंटरेस्ट लेते हैं, 40, 50, 60% भी. So that is why. Third thing is, अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा भेजना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इट कैन डायरेक्टली डू इन द बैंक. जैसा होता है पीएम किसान, ये बहुत सारी योजना के अंदर गवर्नमेंट पैसा भेजती है लोगों को, गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में. So when there is a bank account, then only it will happen. So financial inclusion is very important, and there is a scheme of government of India to open bank accounts that is called as Jan Dhan Yojana, प्रधानमंत्री जन धन योजना. तो सुना होगा आपने, zero है ना, zero balance accounts and all. So specifically the idea is that the poor and those who are living in rural areas should also have a bank account so that they can keep their savings, they should take loans from bank, they should get the benefit of direct benefit transfer from government. ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि इंप्रूव हुआ है, the financial inclusion has actually improved, है ना. फिर मनी मल्टीप्लायर की बात करें, if you are seeing money multiplier is also increasing, money multiplier. अब ये क्या होता है, देखो मनी मल्टीप्लायर में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, but there are two factors that determine it: the amount of cash individuals is having and the reserve that banks maintains and all. अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब मनी मल्टीप्लायर ऐसा होता है कि अगर लोग इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, if this person is keeping more money in the banking system and the bank is extending more and more loans to the people, then monetary supply will be high, money multiplier will be high. But if the individual is keeping in his all the money in his cash as in his house and not putting it in the bank, बैंक में पैसा नहीं डाल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा. या अगर बैंक के पास पैसा आ रहा है और बैंक जो लोन नहीं दे रहा है, एक्सटेंड कर, बहुत कम लोन एक्सटेंड कर रहा है, इन दैट केस आल्सो मनी मल्टीप्लायर विल बी लेसर. सो मनी मल्टीप्लायर हायर कब होता है, जब people are depositing money in the bank as much as possible and bank is extending loan to the people as much as possible. In that case money multiplier is high. तो वही बता रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर जो है इट इज इंप्रूविंग, लेकिन वही बता रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम पर बिकॉज देयर वर कैश होल्डिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी हैड सीन रिजल्टिंग इन अ फॉल. तो जब कोविड-19 था, देखो मैं दिखाता हूं मनी मल्टीप्लायर, जब कोविड-19 आया था फिस्कल ईयर 2021 में आया था ना, FY21 में तो क्या हुआ, FY21 मींस फिस्कल ईयर 2020-21, इसी टाइम पे कोविड आया था. तो आप देखो मनी मल्टीप्लायर गिरा था. व्हाई? Because people were putting money in their cash, not in the bank, but within themselves in their own houses. ये लिखा हुआ है देखो. It declined during COVID-19 because as increased economic uncertainty caused individuals to keep their cash in the cash holdings. क्योंकि uncertainty में कारण से लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे थे, कैश रख रहे थे, ठीक है, and that is what the idea is. तो नीचे चला गया, है ना.
सो अब देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर अगेन इट इज गोइंग कमिंग अप आउट, है ना. सो दैट्स द आइडिया ऑफ मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर सिंपल लैंग्वेज समझो कि as much as possible people should deposit in bank and the bank should extend as much as possible loan to the other people. इस दोनों में से कोई भी कम रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होते जाएगा. So I've explained in a simple way. ग्रॉस एनपीए मैंने बताया, देखो घटते जा रहा है ना. एनपीए मींस वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सीआरआर मैंने बता दी 6.77% है. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ये पूछा था एग्जाम में, किसी एग्जाम में गिफ्ट सिटी के बारे में वी हैव सीन अ क्वेश्चन. सो आईएफएससीए इज देयर, है ना. आई होप यू आर अवेयर. और एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक एलेट में आया था 2 साल पहले. They had asked about gift city. Please read about gift city. This is very important, and it's in Gandhinagar, Gujarat, and it is India's first international bullion exchange. This is the greenfield project, means made from zero. Greenfield project मतलब क्या होता है कि पहले कुछ नहीं था, एकदम नया से बनाया गया. That's the greenfield project. है ना. Brownfield project is earlier there was a city but we have renovated. That's called as brownfield. ठीक है. So ये पता होना चाहिए. It is located on Sabarmati River, है ना, near Sardar Vallabhbhai Patel Stadium and all. And it is तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा. Please read it. I would suggest to read about it in detail. वहाँ IFSCA वगैरह मिलेगा and all, है ना. India's International Financial Service Center and all. Because इस पे क्वेश्चन आ चुका है ना. Again I'm expecting that they can ask again. ये पता होना चाहिए. External sector में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है. Let's talk about that. Red Sea disruption they're talking about, and Strait of Hormuz disruption and Panama Canal disruption. So let us talk about these three. Okay. So can you please tell me about this? I'm giving you 30 seconds. It is saying disruption in the Red Sea began in November 2023. So why it is talking about this? What is the reason? कोई बता सकता है? Okay, let me explain. देखो, this is India, this is Red Sea. Why we have seen disruptions? We have told you that here the Israel-Palestine conflict is happening, and any ship which is bound from Israel, which is coming from Israel or France or UK or anyone supported by US, is coming in this region, the Houthi rebels are attacking them. Okay, और ये जो इजिप्ट वाला ये वाला रास्ता है, यहाँ पर सुइस कैनाल है ना, they are crossing through Suez Canal. Then what is the alternate route? तो अल्टरनेट रूट ये है कि अगर मान लीजिए यूके से या फ्रांस से शिप पहले ऐसे आती थी मान लो, सो नाउ दे हैव टू कम लाइक दिस थ्रू दिस. और ये वाला जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, है ना. सो केप ऑफ गुड होप के रास्ता से आ रहे. केप ऑफ गुड होप इज अ प्लेस इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इट कि दे हैव टू कम थ्रू दैट रूट because of disruption. Similarly, as Hormuz Strait, ये बहुत important है, which challenged 21% of global petroleum liquid consumption, have disrupted energy and these prices. देखो, see it carefully. This is Iran, this is Saudi Arab. ये मैंने कई बार बताया, but still again I am repeating. So you can see it here. This is Saudi Arab, this is Iran, this is India. Okay. Just hold on for a second. This is Persian Gulf. मैंने बताया this region is famous for oil and natural gas. सारे तेल यहीं पर होता है, मतलब अच्छा खासा on the eastern side. और ये वाला जो है, this is actually Gulf of Strait of Hormuz. Okay. तो जितना भी शिप है, ऑयल टैंकर्स वगैरह, वो यहाँ से निकलेगा. मतलब इस रास्ते से, पहले कुवैत से आ रहा है, कतर से आ रहा है. दिस इज कतर एक्चुअली. कतर से आ रहा है, यूएई से आ रहा है. ठीक है, इट विल क्रॉस लाइक दिस. नाउ द प्रॉब्लम इज ईरान इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद यूएसए. मतलब नॉट ओपन वॉर, बट यस देयर आर सम फ्रिक्शंस एंड ऑल. तो कई बार क्या होता है कि एक्चुअली ईरान डज नॉट अलाउ, और लाइक इट क्रिएट्स लाइक द यूएस हैव इश्यूज इन यूएस शिप्स, स्पेशली इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज आल्सो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इसीलिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, और वहां सारे ऑयल नेचुरल गैस उधर से जाते हैं. तीसरा है ड्रॉट इन पनामा कैनाल. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पनामा कैनाल, बट लेट मी एक्सप्लेन अगेन. और इसमें भी एलेट में क्वेश्चन आया था. आई हैव टोल्ड यू दैट अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड बाय व्हिच. तो एक आंसर था पनामा कैनाल, एंड अनदर वाज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, है ना. Okay. So when there was no Panama Canal, and if you have to go, मान लीजिए यूरोप से जाना आपको यूएस के वेस्ट में, मान लीजिए यहाँ पे लॉस एंजलिस जाना है, या सैन फ्रांसिस्को जाना है, या सिएटल जाना है, तो there people used to go by Strait of Magellan like this. But now the shorter route is this one. ऐसे शॉर्ट रूट चला जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या है कि पनामा कैनाल है, यहाँ पर लेक है,
पनामा में, उसी के थ्रू जाना होता है, एंड दैट लेक इज गेटिंग ड्राइड अप। ओके, एक छोटा सा लेक है, उससे पास करना होता है तब उधर जाती है, और लेक तो सूखा जाए तो शिप पास कैसे करेगी? सो दैट इज एन इशू। और जब बड़ी शिप होती है, बिग शिप को के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको डीप वाटर चाहिए होता है, especially the big ship needs deep water to actually sail, otherwise it will not be able to sail if there is a shallow water। कम पानी रहेगा तो सेल नहीं करेगी ना, बड़ी शिप को हेवी, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल क्लास 9th में। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ड्रॉट हुआ था पनामा कैनाल में, उससे भी 5% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम को इंपैक्ट किया था। क्यों? बिकॉज अगर आपको मान लीजिए यूरोप से कोई बिजनेस किया, यहाँ अफ्रीका से जा रहा है, मान लीजिए, तो अगर इसको वेस्ट यूएस में जाना है तो ऐसे की जगह उसको ऐसे जाना पड़ेगा, विच इज अ वेरी लॉन्ग रूट, है ना, बिकॉज वी हैव सीन ड्रॉट इन द पनामा कैनाल। ये पनामा कंट्री है, यहाँ पर लेक है, उससे क्रॉस करना होता है, कैनाल ऐसे बनाया गया है कि इट पासेस थ्रू दैट लेक, ठीक है, बट दैट लेक हैज ड्राइड अप, दैट्स एन इशू। ठीक है, ये तो वी हैव डन अबाउट इट, इसमें कुछ खास नहीं बताने का, डिस्कस करने को। रिबाउंड्स इन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड थोड़ा सा बीच में और डाउन हो गया था, थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट स्टिल थिंग्स आर दिस, है ना। हीट वेव्स की बात करें, देखो 2020 में हीट वेव्स जो है लेस देन 10 प्लेसेस में इतना था, अब 2024 में हीट वेव्स देखो कितना ज्यादा है। see the numbers, like we have seen a lot of heat waves, है ना, more than 30। रेड वाला देखो, पूरे मिडल ऑफ इंडिया में आपने खाली हीट वेव, यहाँ पूरा हीट वेव्स देखा। so why is heat wave bad? Major tomato and onion producing states experience heat wave because ये सब खराब हो जाएगा, टमाटर, ओनियन, this will get rotten or the plant will get burned, I would say। तो देखो 2020 में नहीं था, 2024 में है। so one of the reason for food inflation might be this, है ना, कभी क्या होता है, टमाटर का दाम बढ़ जाता है, प्याज का दाम बढ़ जाता है। एक रीजन ये हो सकता है कि हीट वेव आता है, तो उससे क्या होता है कि जो धान है वो जल जाएगा ना। सो या धान कह रहे हैं, या जो भी फूड ग्रेन, जो भी प्लांटेशन किया गया, इफ इट इज टू मच हीट वेव्स देन ऑफ कोर्स इट विल गेट बर्न। सो दैट इज आल्सो एन इशू कि हीट वेव्स भी एक समस्या है, प्रॉब्लम है ना। ओनियन प्रोडक्शन देखो, इन्होंने दिखाया कि देखो ओनियन प्रोडक्शन नीचे चला गया, है ना, एबल टू सी इट, है ना, वी हैव सीन इट इन दिस ईयर, ठीक है। Now let us talk about this also। थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इसकी बात कर रहा हूँ। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सोलर पीवीज, है ना, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। तो अगर आप इसमें देखोगे, है ना, तो चाइना का अच्छा खासा रोल रहता है। रेड वाला चाइना देखो, कहाँ इतना चाइना, यहाँ चाइना वेफर बनाने में, सिलिकॉन वेफर, पॉलीसिलिकॉन, है ना, यहाँ भी देखना बहुत जगह ना चाइना का काफी रोल है। So यही बात हो रही थी। So we are talking about this, about 60% of the world's wind, let me make it with other pen, world's wind installed capacity sourced from China, है ना। China houses 80% of world's battery manufacturing। China allocates $546 billion towards various investment in solar and wind energy। तो ये सब चीज में चाइना आगे। On the solar front, China controls supply of primary material। So जितने भी प्राइमरी मटेरियल है सब मोस्ट जो है चाइना कंट्रोल करता है ना। China's vertical integration across entire electric vehicle supply chain, etc., has enabled it to regain global dominance। So they are writing the economic survey, which is written by Finance Ministry, Government of India. They are accepting this. But yes, in these sectors, China is very ahead. Electric, battery, सब में सब आगे हैं। So that is an issue। तो इंडिया को अगर नेट जीरो इमिशन अचीव करना है 2070, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, है ना। We have discussed about what is net zero emission, India's Panchamarit target। So one of the target is that we should ensure net zero emission by 2070। What is net zero emission? I have explained in this class। तो net zero emission अगर 2070 अचीव करना है, so we have to switch towards electric vehicles। और प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ क्या है कि एक्चुअली चाइना इज वेरी मच अहेड ऑफ अस। Maybe we have to take the help of, or we have to initially at least import something from China। ठीक है, और भी दिखा रहे हैं, जैसे निकल है तो 65% चाइना का कंट्रोल है, processing है ना, global output। Cobalt 68%, lithium 60% of global output respectively। These are written in this, है ना। तो rare earth metal में भी China contributes 60% of global mining and 90% of global processing output। Even lithium ion batteries which are helpful in electric vehicles, इसमें भी देखोगे they are very much dominant। तो परसेंटेज नहीं याद रखना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए about the world economy and Indian economy। That is what the idea is। Now मैंने आपको कई बार बताया है कि इंडिया celebrated its 75th independence in 2022 and we'll be celebrating 100th independence in 2047। And this year the target is that India should become Viksit Bharat। What is Viksit? Viksit Bharat का क्या मतलब है कि we should become developed।
by 2047. Currently we are a developing country. और इस पीरियड को गवर्नमेंट हैज डिफाइंड इट एज अमृत काल, है ना, that the next 25 years is actually अमृत काल. So basically इसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए? Yes, very good Ashnur. हाँ, डेवलप्ड कंट्री को विकसित कहते हैं. ग्रेट. हाँ, this will ensure economic growth of 8%, है ना. to achieve investment rate जो है ना कम से कम 35% से राइज करना चाहिए from current 31%. It means we have to promote investment. So both government investment as well as private investment, because government तो भी invest करती है, private investment actually we need to promote and all. That's the idea, है ना. खास AI में, robotics, biotechnology में, है ना. So that is also very important. Biotechnology बहुत important, जैसे आजकल GM crops हो गया, increasing productivity, high yield variety seeds हो गया. Artificial intelligence तो आप लोग जान ही रहे हो. Robotics also is very important nowadays, है ना. And then we have to ensure 100% literacy by 2030, है ना. 2030 में sustainable development goals का target है ना. SDG 4 talks about quality education, है ना. So that is what you should know. फिर कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, जैसे जीएसटी गवर्नमेंट ने बनाया 2017 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, रेरा, ये सब का क्या काम था? देखो जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये था ना. आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों बनाया गया था? आईबीसी इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल वो कोलैप्स कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका लिक्विडिटी सील फॉरन तुरंत होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. यानी प्रॉपर एग्जिट. अगर इफ अ कंपनी इज नॉट एबल टू पे बैक द लोन्स तो क्या करेगा, किया जाए, उसको वैसे ही रहने दिया जाए? नहीं, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो, फास्ट लिक्विडेशन हो, उसका एसेट सेल किया जाए ताकि लोन्स रिकवर किया जाए. सिमिलरली रेरा बनाया गया था बिकॉज रियल एस्टेट में बहुत सारे इश्यूज है. रियल एस्टेट इन बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत बार क्या होता है, बिल्डिंग आधा बन के रह गया, बिल्डर ने पैसा ले लिया, बिल्डर हैज टेकन मनी, द कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीट, and actually the people, the flat buyers have already paid, they are not getting the building or the flats. उसके लिए रेरा बनाया गया to ensure that yes, in real estate sector the problem should be solved, है ना. बीच में प्रोजेक्ट नहीं रुक जाए, है ना. These things should not happen. So these are the things the government, है ना. Investing infrastructure, keep it going. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके बारे में पढ़िएगा. ऑलमोस्ट 111 लाख करोड़ है. देखो 111 करोड़ नहीं है, प्लीज बी केयरफुल. 111 लाख करोड़ का टारगेट है FY20 से FY2025 में खर्च करने का, विच इज गोइंग टू एंड दिस ईयर, है ना. FY20 मींस लिखा क्या है, FY20 टू FY25. इसका मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025. 1 April 2019 to 31st March 2025. This target was that, है ना. National infrastructure pipeline is basically investment in building projects, big projects. That is the idea. Roads, buildings, highways, etc. ठीक है. इसमें allocate किया गया था. दूसरा है national monetization pipeline. Do you know this? मतलब leasing to private companies. What is national monetization pipeline? ये भी काफी हुआ था, 6 लाख करोड़ तक रेवेन्यू रेस करने के लिए. I'll explain. तो क्या होता है, मान लो कोई एक हाईवे, या छोड़ो ना, मैं बताते कोई मॉन्यूमेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं वो सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ. और एक जितने मॉन्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. अब गवर्नमेंट ने क्या किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ठीक है, आप इस मॉन्यूमेंट को चलाओ, मेंटेन द मॉन्यूमेंट, कलेक्ट सम फीस, एंड लेट्स से आई एम गिविंग इट फॉर 10 years एज अ लीज. सो यू हैव टू गिव मी लेट्स से 10 करोड़ और 100 करोड़ फॉर दिस. मैं 10 साल के लिए आपको दे रहा हूं, आप इसको मैनेज करो, कंट्रोल करो. यहाँ जो लोग आएंगे उनसे फीस कलेक्ट करो, कलेक्ट द फीस एंड ऑल. फॉर 10 years आई एम गिविंग इट एंड यू शुड गिव मी 100 करोड़ जस्ट नाउ. इससे क्या, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया 100 करोड़. और ये प्राइवेट कंपनीज को 10 साल के लिए मिल गया. 10 साल तक वो धीरे धीरे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते रही. हो सकता है वो 150 करोड़ कमा ले, समथिंग लाइक दैट. So the government will, with the help of national monetization pipeline, the government will immediately get money for making roads, infrastructure and all, है ना, by leasing the government land or government highway or government architecture to the private company and getting the money. ठीक है, आप ये ले लो और आप हमको जितने दिन तक चलाना है आप उसको उसमें फीस कलेक्ट करो और हमको अभी इमीडिएटली पैसा दे दो. दैट्स द आइडिया ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. ठीक है. फिर रिन्यूएबल एनर्जी में देखो इंडिया का सोलर एनर्जी से 97.8 गीगावाट होता है, 48 गीगावाट विंड एनर्जी से, देन हाइड्रो से इतना आता है. तो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. देन ODF प्लस स्टेटस, देखो एक होता है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री. ये सब अंडरस्टैंड करना जरूरी है. ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में स्वच्छ नहीं करना. एंड दिस इज वाज द टारगेट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. ये स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट था
that was supposed to be achieved by 2nd October 2019 when we are celebrating 150 years of Mahatma Gandhi's birthday. ठीक है, ये तो हो गया ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री। अब ओडीएफ प्लस का क्या मतलब हुआ? ओडीएफ प्लस की बात हो रही है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, मतलब वी हैव अचीव्ड ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच नहीं करना है। प्लस मतलब हुआ कि उसके अलावा भी और कुछ चीज जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट में 22 नवंबर तक यानी ओपन डेफिकेशन फ्री भी हुआ है, प्लस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा, ताकि जैसे अगर गटर का पानी है, नाली, सीवेज है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। दैट्स द आइडिया, सो दैट सीवेज ट्रीटमेंट शुड बी डन एंड देयर शुड बी मोर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो आप देखोगे मोर देन 75% ये सब रीजन में ग्रीन वाला जो है, ठीक है, देन 50% कहां हुआ, 25% कहां है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, यानी मार्च से इसमें इंप्रूवमेंट आया। देखो ग्रीन वाला यहाँ पे ग्रीन बहुत कम कम है ना, तो अगर मार्च के मुकाबले देखोगे, सो वी हैव सीन इंप्रूवमेंट। So स्वच्छ भारत मिशन, ये सब पता होना चाहिए, these are asked in the exams, that is why I'm telling you, ठीक है। So now आपको एक होमवर्क है, आफ्टर द क्लासेस होगा, प्लीज राइट स्वच्छ भारत मिशन दो है, एक अर्बन है एक रूरल है, यानी ग्रामीण वाला है, ग्रामीण मींस रूरल। प्लीज टेल मी which ministry is implementing urban स्वच्छ भारत मिशन and which ministry is implementing rural स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। So this is all about today's class. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day. Please comment these two in the comment section. After the class is over, नीचे recorded video मिलेगा, उसमें नीचे आप comment कीजिएगा। Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.